Under the category of isolation of different phytoconstituents, now I will discuss the isolation of glycosides. Glycosides are the, as the name indicate, these contain the sugar moieties. Glyco जो term है इससे आप indicate कर सकते हैं that ग्लाइकोसाइड्स से आपको टर्म को इंडिकेट होता है कि शुगर होगा, शुगर मोइटी है. Glycoside is any molecule in which a sugar group is bonded to an anomeric carbon to another group via glycosidic bond. Glycosides के अंदर एक होता है aglycon moiety और एक होता है glycon moiety. Aglycon moiety is responsible for the therapeutic effect of a particular drug, and glycon moiety is the sugar moiety which is responsible or which takes part in the solubility of that particular compound. This enhances the solubility. Glycosidic bond is a certain type of chemical bond that joins a sugar molecule to another molecule, and the sugar group is known as glycon and the non-sugar group is known as the aglycon moiety. As I have already told you that aglycon have therapeutic activity, whereas glycon has a sugar moiety or which helps in the solubility. ग्लाइकोसाइड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ग्लाइकोसाइड्स में भी बहुत सारे जैसे केमिकली डिपेंडिंग कम्स एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स. एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड में जैसे एलो क्वारगन आपको पता होगा, एलोवेरा का प्लांट है, दैट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड. कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में आपके आते हैं डिजिटालिस प्लांट जिसको हम फॉक्स क्लोव लीव्स भी बोलते हैं, डिजिटालिस परप्यूरिया से हमें मिलता है. डिजिटालिस इज अ वेरी इफेक्टिव कार्डियोटोनिक एजेंट. And next if we will talk about the saponin glycosides, saponin means these have a forming property. forming property कि अगर सोप लाइक एक्टिविटी हो, सोप लाइक कंपाउंड्स हो, जैसे हम लिकोराइस की बात करते हैं, लिकोराइस होता है आपका मुलट्ठी. लिकोराइस जैसे ग्लिसराजा है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर आपकी जिससे हमें मिलता है ग्लाइसरेसिनिक एसिड. लिकोराइस मुलट्ठी को बोलते हैं, जो वो भी घर में बहुत यूज़ की जाती है. दिस इज़ एक्ट एज अ स्वीटनिंग एजेंट इन द कफ सिरप्स. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एंड फॉर द culinary पर्पसेस मुलट्ठी इज़ यूज्ड. तो ये कैटेगरी आती है सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर. और इसी तरह आपकी अगर आप ग्लाइकोसाइड्स को और डिफ्रेंशिएट करो तो आपकी एल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड, बहुत सारी कैटेगरीज हैं. अगर हम बात करें कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो हमने बात करी कि ए ग्लाइकोन मोइटी के साथ एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू बाउंड होती है, कंडेंस होती है, तो इसके आधार के ऊपर भी हम वी कैन क्लासीफाई द ग्लाइकोसाइड. जैसे इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें हम कैटेगराइज करते हैं सी ग्लाइकोसाइड्स, एन ग्लाइकोसाइड्स, एस ग्लाइकोसाइड्स, ओ ग्लाइकोसाइड्स. सी ग्लाइकोसाइड्स मीन्स दैट जो इसके अंदर जो शुगर मोइटी है दैट इज़ अटैच विद द कार्बन ऑफ द ए ग्लाइकोन मोइटी. ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे एलोवेरा के अंदर जो आपके प्रेजेंट होते हैं एलोइन है, दैट इज़ अंडर द कैटेगरी ऑफ द सी ग्लाइकोसाइड. नेक्स्ट कम टू ओ ग्लाइकोसाइड, दैट मीन्स शुगर मोइटी इज अटैच विद द ऑक्सीजन ग्रुप एंड इन दिस एग्जांपल इज सेना. इसका है ओ की बात करें तो सेना इज़ परगेटिव. आप सेना को एज ए परगेटिव यूज़ करते हैं. परगेटिव मीन्स द एजेंट्स विच आर यूज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन और विच हेल्प्स इन द evacuation of the stools from the GIT. If we will come to the
N-glycosides, that means the nitro of amino acid group is attached with when they have a glycosidic linkage with the glucose, and under the S means sulfur. Sulfur group of aglycone is attached with the glycoside. Fine. And in this example is black mustard. Black mustard जो सरसों होती है. Okay, I will write here black mustard. ब्लैक मस्टर्ड से आपको सिंग ग्रीन मिलता है, दैट इज़ यूज्ड. फाइन. नेक्स्ट अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे जो दो ड्रग्स वो है ग्लाइसरेजिनेटिक एसिड एंड र्यूटीन. इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोसाइड की कैटेगरीज में. अगेन यू शुड नो व्हाट आर ग्लाइकोसाइड, व्हाट आर देयर फिजिकल एंड केमिकल properties, and what is their solubility, and what are the different parts of the glycoside molecules. Means aglycone means which is non-sugar moiety and have a therapeutic activity. Glycone part is a sugar moiety which helps in the solubility. And under this categories, among the anthraquinone glycoside, cardiac glycoside, saponin glycoside, aldehyde glycoside, phenol glycoside, we will here discuss only two glycoside under different categories. One is a pentacyclic triterpenoid glycoside. Under this is a glycyrrhizinic acid, and flavonoid glycosides rutin. Flavone is a ring. Okay, I will discuss later. First we will discuss this triterpenoid skeleton. This is a triterpenoid skeleton which is under the in the drug licorice. Glycyrrhizinic acid is a pentacyclic triterpene acid, and biological source is Glycyrrhiza glabra. This is obtained from the roots or stolons of Glycyrrhiza glabra, and family is Leguminosae. What are the uses? Uses is, this is a natural sweetener, as I have told you. This is used as a sweetening agent in the cough syrups. दिस इज़ एंटी इन्फ्लामेटरी. सो इसकी दो एक्टिविटी हो जाएंगी कफ सिरप में. एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी है कि अगर सूजन आ गई है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कफ है तो एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट होगा, दूसरा इसका क्या होगा स्वीटनिंग एजेंट कि वो जो प्रेपरेशन है आपकी फार्मास्यूटिकल उसको ये सिरप्स को क्या करेगा एक स्वीट टेस्ट देगा. देन दिस हैज़ एंटी अल्सर प्रॉपर्टी एंड दिस इज कॉमनली नोन एज licorice मुलट्ठी which is also used in the home kitchen. एक किचन में आपको आपकी जो किचन होती है हमारी घर की उसमें बहुत सारी हमारी ऐसी हर्ब्स यूज़ की जाती हैं डिफरेंट फूड आइटम्स में. लाइक ओसिमम सैंक्टम तुलसी को हम यूज़ करते हैं. हम कहते हैं कि उसको डिकॉक्शन बना के उसकी चाय में पियो तो दैट इज़ वेरी इफ़ेक्टिव. एंड देन हम बात करते हैं मुलट्ठी की, गला ख़राब है, हनी की बात करते हैं. हनी जो है आपका सूदिंग इफेक्ट देता है, कफ सिरप्स में यूज़ होता है हनी. उसके बाद अगर आप करक्यूमिन पे आ जाओ जैसे कि हल्दी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है. इसी तरह हमारी बहुत सारी ऐसी हम जो फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग्स है जो हमारी डेली लाइफ में इर्द गिर्द घूमती हैं और बस हमें उस पर अवेयर होना है कि हाउ वी कैन टेक दैम, कि हम उसका कितना अवेयरनेस है, क्योंकि आप तभी उसके बारे में उसका फार्माकोग्नोसी यू कैन remember the biological source name, this is a genus, this is a species. आप इसके बारे में तभी ज़्यादा पढ़ पाओगे अगर आप अवेयर होगे. जैसे मैं बात कर रही हूँ लिकोराइस की, लिकोराइस इज़ अ मुलट्ठी और जो ग्लिसरेजिनेटिक एसिड है दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द मुलट्ठी और लिकोराइस. एंड व्हाट इज़ द बायोलॉजिकल सोर्स? बायोलॉजिकल सोर्स इज ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा. ग्लाइसराइजा इज अ जीनस एंड दिस इज स्पीसीज. यू ऑल नो दिस इज़ अ बायनोमिनल नॉमेनक्लेचर फॉर एनी स्पीसीज. किसी भी हमने किसी को नाम देना होता है तो उसके लिए हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिकोराइस इज ग्लाइसरेजिन विच इज़ अ पोटाशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ग्लाइसरेजिक एसिड. After hydrolysis, it affords
2 molecules of gluconic acid and a glycon glycyrrhizinic acid. इसके अंदर this is the a glycon moiety which is a triterpenoid structure. That means their chemical moiety is a triterpenoid. Fine. Next come to the procedure for isolation. For this we take the accurately weighed quantity of coarse powder of glycyrrhizal roots, extract that powder with the chloroform, then filter and discard the filtrate. We will take the mark. Again I am telling you there are the two things in the filtration, mark and filtrate. Filtrate क्या है, जो आपका सॉल्वेंट के साथ नीचे बचता है, और मार्क क्या है, वो सॉलिड, वो क्रूड ड्रग जो कि आपकी फिल्टर मीडियम के ऊपर बचती है, हमें उसको लेना है मार्क को, हमें डिस्कार्ड कर देना है फिल्ट्रेट को और लेना है मार्क को. मार्क को लेके हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट द मार्क विद द 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फॉर फ्यू आवर्स, filter the extract and filtrate with the 3 portions of chloroform. Separate and combine the chloroform layers. Distill of the chloroform extract to yield a dry residue of glycyrrhizinic acid. Fine. Next come to the identification test, then that how we will identify that the extracted phytoconstituent is glycyrrhizinic acid. So for this we will do test, chemical test, like we identify the phytoconstituents by different method. One is a chemical test, one is the chromatography methods, and another one is modern analytical techniques. These comes under the modern analytical techniques कि हम different chromatographic methods को use करके या spectroscopy methods को use करके we can identify. So here I am discussing the chemical test. One is the Lieberman test. In this we mix the 2 ml of the extract with 2 ml of acetic anhydride, boil it and add 0.5 ml of sulfuric acid. What it will give? It will give the blue color which will indicate that there is the presence of glycyrrhizinic acid. Next is the Lieberman-Bouchard test. In this test there will be a difference of one reagent. In this mix 2 ml of test and with the 1 ml of chloroform and 1 ml of acetic anhydride, and then add 1 drop of sulfuric acid, and this will give blue, green to red orange color on inference. If it will react with the glycyrrhizinic acid present in the sample solution, it will give blue, green to red orange color, which will indicate that the sample we extracted is a glycyrrhizinic acid. Then again come to the chromatographic technique is the HTLC and HPTLC. TLC is thin layer chromatography, HPTLC is high performance thin layer chromatography. In this we get the stationary phase and mobile phase. Again I am telling you what is chromatography. Chromatography is an analytical technique in which we can separate or we can analyze different phytoconstituents or different constituents depending upon their affinity towards the stationary phase or towards the mobile phase. Stationary phase, what is stationary phase? Stationary phase we use silica gel slurry, silica gel mainly as a stationary phase, and in mobile phase we use the different solvent with which the phytoconstituents can be eluted. Means the phytoconstituent should have affinity towards the stationary phase or towards the mobile phase. Then in this we use stationary phase silica gel G, mobile phase ethyl acetate, formic acid, glacial acetic acid in the ratio 15:1:1, or we can take butanol, glacial acetic acid, water in the ratio 7:1:2. Then inference is by the detection with the spray with the anilsaldehyde sulfuric acid reagent, heat to 110 degrees Celsius for 10 minutes, or blue fluorescence in UV cabinet at 366 nanometer. We can detect it with the spraying any chemical reagent, or we can get the absorbance under the UV cabinet. So this will give the your analytical result.
Then come to the second compound under the category of glycoside is rutin, but the rutin is under the category of flavonol glycoside. What are flavonol glycoside? Flavonol occurs in the plants as a glycoside with one or more type of phenolic hydroxyl groups and combined with the sugar residues. The basic structure of flavonoid is there is a aromatic ring A, which is condensed with the another ring which we will name C, and this is again connected with the an aromatic ring B. So this is the basic structure for the flavonoid. This is A ring, this is C ring, this is B ring. Fine. So there are the different group substitution on these rings which will give the molecular structure of different phytoconstituents. Here we will talk about the rutin. Category is the flavonol glycoside. Biological source, it can be extracted from the leaves of Phagopyrum esculentum, also known as buckwheat. इसको हम buckwheat भी बोलते हैं. buckwheat को बोलते हैं कुट्टू, अगर हिंदी में बात करें इसको कुट्टू बोलते हैं. उसमें से हमें ये मिलता है रूटीन. फाइन. रूटीन के और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं. जैसे हम बात करें तो मोस्टली जो सिट्रस है उनमें से हमें रूटीन मिलता है. हमें एप्पल से रूटीन मिलता है, फिक्स से भी रूटीन मिलता है हमें, और बोथ ब्लैक एंड ग्रीन टी, ब्लैक एंड ग्रीन टी आर द सोर्सेज ऑफ द रूटीन. फाइन. तो ये जो आपकी रूटीन है इसका क्या एक्शन होता है आपको सबको पता है. जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं हम खाते हैं, हम बोलते हैं कि दीज आर वेरी इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, दीज आर एंटीऑक्सीडेंट. Fine. So these have a potent antioxidant activity, anti-inflammatory activity, and the main activity is the strengthen the capillaries. Means this जैसे use में है कि this is used as a capillary fragility factor. What do you mean by capillary fragility? Capillary fragility is a measure of the resistance of the rupture of the small blood vessels. कि जो small blood vessels है, capillaries है, उनकी ruptures को कितना वो resist कर सकता है, उसके आधार पे हम capillary fragility factor करते हैं. जो हमारा routine है ये help करता है. This increases the flexibility, of the blood vessels in the arteries and capillaries, and it also help in preventing the blood clot, also prevent blood clot. So this is a very important phytoconstituent which helps in to maintain the flexibility of blood vessels and resist the rupture of the blood vessels. Then this is a chemical structure for the and the IUPAC name for the routine. Here I will tell you this is the flavone basic structure जो करी थी. This is a basic moiety. This is the A ring, this is the B ring, this is the C ring. जैसे आपको बताया कि फ्लेवोन में एरोमेटिक रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं A, उसके साथ C है और साथ में इसके है आपकी C ring. Fine. Procedure for the come to the procedure for the isolation. Take the accurately weighed quantity of coarse powder of the Phagopyrum leaves. Phagopyrum, again I want to tell you, this is buckwheat. This is a type of grain जिसको मैंने बताया कुट्टू बोलते हैं. This is a type of food grain. Then defat the powder with the anhexane. Anhexane is mainly used for defatting, that's why we discard this filtrate. We will discard this filtrate and extract the mark with 78% alcohol for 1 hour.
filter and evaporate the solvent to obtain a dry residue. Dissolve this residue in sufficient quantity of 30% acetone, then filter and evaporate the filtrate to 1/4 of original volume, कि जितना उसका original like 100 ml है तो 25 ml तक उसको we have to evaporate that. Fine. Add sufficient quantity of 5% aqueous solution of borax until resulting pH 7.5. हमें उसकी pH maintain करनी है with the continuous stirring. How you will maintain the pH? You can use the pH meter or pH paper and you are just continuously adding, धीरे धीरे करके उसको डालना ताकि उसका वो pH maintain हो जाए. Fine. Then add sufficient quantity of solid sodium chloride with stirring. Filter and acidify the clear filtrate with phosphoric acid to bring pH 5.5. देखिए पहले हम उसकी अल्कलाइन की तरफ pH ले गए थे, अब हम उसको एसिड डाल के उसकी pH को हमें 5.5 करना है. pH मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो एज अ सॉल्युबल हैं या फ्री बेस हैं, वो pH के ऊपर डिपेंड करेगा और हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं. जैसे अल्केलॉइड के केस में होता है कि हमें वो जो आपके अल्केलॉइड्स हैं वो फ्री बेसिस हैं, तो हमें उनको पहले एसिड डाल के उसको हमें सॉल्ट फॉर्म में करना है. दोबारा से जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे सॉल्वेंट के साथ तो हम उसको फ्री बेस में दोबारा से अल्केलाइन करके ले आते हैं. इसी तरह जो pH मेंटेन जहाँ पे है तो pH जो है वो दूसरे की सॉल्युबिलिटी के बारे में जो फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट की सॉल्युबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है कि वो किस पे हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. देन स्टर फॉर 15 मिनट्स. Filter and wash the residue with 20% sodium chloride solution. Again filter and evaporate the filtrate to 500 degrees Celsius to 1/4 of its original volume. Add hydrochloric acid in hot condition to bring pH 1.5. दोबारा से आपकी 7.5 से 5.5 करी थी आपने. फाइन. अब इसको दोबारा से और एसिडिफाई करना है, इसकी और जो है आपको pH रिड्यूस करनी है, एसिडिक मीडियम की तरफ ले जानी है. pH हम इसकी मेंटेन करेंगे 1.5 पे. देन कूल एंड कीप इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट. इसको फॉर द ओवरनाइट यू हैव टू kept your preparation in the refrigerator so that the crystals of rutin will separate out. Collect it and dry to calculate the percentage yield. Fine. तो जब हम रूटीन की एक्सट्रैक्शन करते हैं तो इसमें pH का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको किन किन स्टेप पे उसकी pH अल्केलाइन से एसिडिफाई करनी है, फिर उसको और ज़्यादा एसिडिफाई करना है ताकि जो रूटीन के क्रिस्टल्स हैं वो आपके क्रिस्टलाइज हो जाएं, वो आपको जो प्रोडक्ट आपका है वो मिल जाए आपको. Fine. Next for this we will do the Shinoda test. Shinoda test is a chemical test which is for the flavonoids. इसमें हम क्या करते हैं, देखिए फिर से हम आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बताना चाहूँगी, हम केमिकल टेस्ट करते हैं और हम डिफरेंट एनालिटिकल मॉडर्न एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं जिसमें आपकी आती है क्रोमेटोग्राफी आती है. फाइन. आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपीज आती हैं. क्रोमेटोग्राफी में बहुत फर्दर है TLC, HPTLC, HPLC, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, फ्लैश कॉलम क्रोमेटोग्राफी. स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपकी UV स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR, देन NMR. तो ये these are the modern analytical technique. MAT means modern analytical techniques which are used for the identification of the phytoconstituents. Fine. For this we will do Shinoda test. Shinoda test is done for the flavonoid, identification of flavonoid. What we will do, we will add the magnesium powder and the few drops of concentrated hydrochloric acid or sulfuric acid to 2 ml of sample solution. Fine. We can also use the magnesium strings. जो magnesium जो धातु है उसकी strings भी होती हैं वो भी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं और इससे आपका इन्फेरेंस क्या आएगा, ऑरेंज पिंक टू रेड पर्पल कलर विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ दैट फ्लेवोनॉइड कंपाउंड.
And in modified Shinoda test, what we will do? We will use the zinc instead of magnesium. The difference is only we will use zinc in place of magnesium, and this will give deep red to magenta color. जैसे एल्केलॉइड के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है ड्रैगन डॉर्फ रेजिन टेस्ट, इसी तरह फ्लाविनॉइड्स के लिए जो केमिकल टेस्ट है कंफर्मेटरी टेस्ट, दैट इज शिनोडा टेस्ट. Next test is the sulfuric acid test. What we will do? We will take the sample and we will add sulfuric acid in it, and it will give deep yellow color to red orange. Fine. Next, lead acetate test. In this we will use the lead acetate solution and mix it with the our test sample, and this will give the yellow precipitate. Next, come to alkali test. In this test we will treat our solution test sample solution with the increasing amount of sodium hydroxide, and this will give yellow color which will decolorize after addition of acid. इसमें क्या होगा कि हम जैसे अल्कली ऐड करेंगे सैम्पल में तो उससे येलो कलर प्रोड्यूस होगा, हो गया एक बार. लेकिन जब आप उसी जो आपका सैम्पल प्लस अल्कली है उसके अंदर आप एसिड के एडिशन करोगे तो वो जो येलो कलर प्रोड्यूस हुआ था दैट विल डीकलराइज, वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से. फाइन. दीज आर द आइडेंटिफिकेशन केमिकल टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रूटीन. Next, we will talk about the chromatography techniques. In this we will discuss TLC, that is the thin layer chromatography, HPTLC, high performance thin layer chromatography, HPLC, high performance liquid chromatography. These are the modern analytical technique which are used to these are analytical techniques which are used to separate or analyze different phytoconstituents or different compounds depend upon their adsorption or partition coefficient and their affinity towards the stationary phase as well as mobile phase. In this we will use stationary phase which will have a silica gel, and mobile phase N-butanol, glacial acetic acid, water in the ratio, different ratios, and what is the inference? This will give the absorbance at the UV in the UV cabinet at 366 nanometer. Fine. जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो जाएं या कंपाउंड्स हो जाएं, उसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि जो आपकी अगर तो आपकी जो कंपाउंड है एक सपोज करो इसकी स्टेशनरी फेज की टुवर्ड्स एफिनिटी ज़्यादा है तो ये कम रन करेगा मतलब आगे ऊपर बढ़ते जाएगा. अगर दूसरे कंपाउंड की ज़्यादा है मोबाइल फेज के टुवर्ड्स और इसके टुवर्ड्स कम है स्टेशनरी फेज के टुवर्ड्स तो वो ज़्यादा रन करेगा. और हम इसका क्या कैलकुलेट करते हैं, रोटेशन फैक्टर करते हैं, दैट इज़ अ डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट. तो हम इसमें एब्जॉर्प्शन से भी मेज़र कर सकते हैं, हम डिफरेंट स्प्रेइंग एजेंट भी यूज़ करते हैं, बहुत सारी TLC HPT स्प्रेइंग TLC को में डिटेक्ट करने के लिए फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को. तो नेक्स्ट है आपकी HPLC इज़ in this we will use the isocratic. Again I will talk about the HPLC. This is the isocratic and gradient type. What is the difference? Isocratic means that the mixture of your mobile phase is consistent over the complete testing time, whereas in gradient that implies the compounding of the eluent mixture is changed during the measurement and so influence the retention of the analytes. Fine. And this in this we use stationary phase C18, mobile phase formic acid, acetonitrile 70 ratio 30 at 35 degrees Celsius, and detection we will did at UV visible detection 340 nanometer. For further if you want more for these topics about the glycyrrhizinic acid or about the routine, you can refer these books. From these books you can get the material to study. Thank you.